हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का मेरे चैनल फिजिक्स की क्लास में स्वागत है। आज हम ड्वेल नेचर ऑफ मैटर चैप्टर से क्वेश्चंस फॉर नीट चौका नंबर 1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वीडियो में सबसे पहले क्वेश्चन है, उसके बाद उनके सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1, द एनर्जी ऑफ ए फोटोन विद मोमेंटम 3.3 इंटू 10 टू द पावर -13 kg मीटर पर सेकेंड, प्लैंक्स कांस्टेंट टू बी 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second is 7.3 into 10 to the power 4, 9.9 into 10 to the power minus 5, 1.3 into 10 to the power 5, 8.1 into 10 to the power 3 joule. Question number 2. A parallel beam of light is incident on a plane surface absorbing 40% of light and reflecting the rest. If the incident beam carries 60 watt of power, the force exerted by it on the surface is 3.2 into 10 to the power minus 8 Newton, 3.2 into 10 to the power minus 7 Newton, 5.12 into 10 to the power minus 7 Newton, 5.12 into 10 to the power minus 8 Newton. Question number 3. A radio transmitter operates at frequency 880 kHz and power of 10 kW. The number of photons emitted per second is 1.72 into 10 to the power minus 10 to the power 31, 1.327 into 10 to the power 25, 1.327 into 10 to the power 37, 1.327 into 10 to the power 45. Question number 4. The photoelectric threshold of tungsten is 2300 angstrom. The energy of electrons ejected from the surface by ultraviolet light of wavelength 1800 angstrom is 0.15 electron volt, 1.5 electron volt, 15 electron volt, 150 electron volt. Solution. Question number 1. The energy of photon with momentum 3.3 into 10 to the power minus 13 kg meter per second, Planck constant to be 6.6 into 10 to the power 34 joule second is 7.3 into 10 to the power 4, 9.9 into 10 to the power minus 5, 1.3 into 10 to the power 5, 8.1 into 10 to the power 3 joule. जो मोमेंटम P is 3 into 3.3 into 10 to the power minus 30 kg meter per second. Energy E is equal to P into speed of light c, 3.3 into 10 to the power minus 13 into 3 into 10 to the power 8, 9.9 into 10 to the power minus 5 जूल. जो एनर्जी ऑफ फोटोन है that is 9.9 into 10 to the power 5 joule. B is correct option. Question number 2. A parallel beam of light is incident on a plane surface absorbing 40% of light and reflecting the rest. If the incident beam carries 60 watt of power, the force exerted by it on the surface is 3.2 into 10 to the power minus 8, 3.2 into 10 to the power minus 7, 5.12 into 10 to the power minus 7, 5.12 into 10 to the power minus 8 Newton.
एक प्लेन सरफेस, सपोज एक प्लेन सरफेस ABCD एक प्लेन सरफेस है, इस पर एक 60 वाट की पावर इज इंसिडेंट। जो लाइट है उसकी पावर है 60 वाट और 60 जूल पर सेकेंड। जो एनर्जी रिसीव कर रहा है सरफेस, दैट इज 60 जूल इन 1 सेकेंड। मोमेंटम P, if this is E1, P is energy divided by speed of light in vacuum। तो P1 होगा 60 डिवाइड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 20 इंटू 10 टू द पावर -8 kg मीटर पर सेकेंड। जो इंसिडेंट पोटेंशियल हो रहा है दैट इज P1। अब 40% ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, तो रिफ्लेक्टिंग एनर्जी होगी, रिफ्लेक्टिंग एनर्जी या रिफ्लेक्टेड एनर्जी 60% ऑफ 60 जूल, 36 जूल। जो पर सेकेंड जो एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है दैट इज 36 जूल। तो मोमेंटम P2 इज 36 डिवाइड बाय 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 12 इंटू 10 टू द पावर -8 kg मीटर पर सेकेंड। चेंज in momentum in 1 second P1 और P2 की डायरेक्शन अपोजिट है, तो जब हम इनको दोनों वेक्टर्स को का डिफरेंस करेंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे। इनकी P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा P2 वेक्टर माइनस P2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा P2 प्लस P1। 12 इंटू 10 टू द पावर -8 प्लस 20 इंटू 10 टू द पावर -8, 32 इंटू 10 टू द पावर -8, 3.2 इंटू 10 टू द पावर -7 kg मीटर पर सेकेंड। The rate of this is change in 1 second. The force exerted rate of change in momentum या change of momentum in 1 second. So this is 3.2 into 10 to the power -7 Newton. The force exerted on the surface is 3.2 into 10 to the power -7 Newton. B is correct option. Question number 3. Radio transmitter operates at frequency 880 kHz
hertz and power of 10 kilohertz. The number of photons emitted per second is 1.72 into 10 to the power 31, 1.327 into 10 to the power 25, 1.327 into 10 to the power 37, 1.327 into 10 to the power 45. Frequency nu 880 kilohertz or 880 into 10 to the power 3 hertz or 88 into 10 to the power 4 hertz. Power P is 10 kilowatt. 10 kilowatt or 10 to the power 3 watt or 1 into 10 to the power 4 joule per second. Energy of a photon H nu, H is Planck's constant. This is 6.6 into 10 to the power minus 34 or nu is 88 into 10 to the power 4. 6.6 into 88 into 10 to the power minus 30 joule. Let number of photons emitted per second is equal to n. तो n इंटू सिंगल फोटोन की जो एनर्जी होती है दिस इक्वल टू पावर जूल पर सेकेंड 1 into 10 to the power 4. So n is equal to 10 to the power 4 by 6.6 into 88 into 10 to the power minus 30 or 34 by 6.68 580.8 or 1000 into 10 to the power 31 by 580.8. 100 1000 डेसिमल हटा दिया तो एक जीरो और बढ़ा दी 15808 2914007 44 62102 172 into 10 to the power 31 जो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड एमिट करेंगे वो उसकी काउंटिंग होगी 1.72 into 10 to the power 31. A is correct option. Question number 4. Photoelectric threshold of tungsten is 2300 angstrom. The energy of electrons ejected from the surface by ultraviolet light wavelength 1800 angstrom is 0.15.
electron volt 1.5, electron volt 15 electron volt and 150 electron volt. Threshold frequency lambda 0 is 2300 angstrom or 10 to the power minus 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इसने मीटर और 23 इंटू 10 to the power minus 8 मीटर. इंसिडेंट वेवलेंथ lambda 1800 एंगस्ट्रॉम और 10 to the power minus 10 मीटर और 18 इंटू 10 to the power minus 8 मीटर. Kinetic energy of emitted electron Kmax Sc lambda minus Sc by lambda 0. H is Planck's constant. C is speed of light in vacuum or Sc 1 by lambda minus 1 by lambda 0. H की वैल्यू 6.6 इंटू 10 to the power minus 34 इंटू C 3 इंटू 10 to the power 8. लैम्डा 1 बाई लैम्डा की वैल्यू है 18 इंटू 10 to the power minus 8 और लैम्डा 0 है 23 इंटू 10 to the power 8 minus 8. 6.6 into 3 into 10 to the power minus 26, 10 to the power 8 10 to the power 8 by 18 minus 10 to the power 8 by 23 और 6.6 into 3 into 10 to the power minus 26 into 10 to the power 8 1 by 18 minus 1 by 23 और 19.8 into 10 to the power minus 18 18 into 23 minus 18 और 19.8 into 10 to the power minus 18 into 5 by 18 into 23 joule Kmax. 18 1 जा 1.1 तो 5.5 by 23 into 10 to the power minus 18 जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर कन्वर्ट कर दें इसको 5.5 इंटू 10 to the power minus 18 23 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 से डिवाइड कर दिया तो 5.5 इंटू 10 बाई 23 इंटू 1.6 डेसिमल एक दूसरे से क्रॉस हो जाएंगे 5 दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट 8 5 27 to 275 और 184 EV 275 184 1184 190 this is approximately 5 1.5 electron volt. The energy of emitted photon
Emitted electron is 1.5 eV. B is correct option.